अभी मैं आज ही देख रहा था कि एक न्यूज आई थी कि some a telescope has recently um, captured something coming out of a black hole. So this is Is it light or solid or what is it? it's some sort of like Or um, sound? no, it's photonic. So it's a light का burst है मेरे ख्याल से, and I'm not sure. It's been एक और टेलीस्कोप है सैटेलाइट बेस्ड, उसका नाम है न्यू स्टार. उसकी Hmm. उसकी उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यही इस टाइप की ब्लैक होल्स को वो करते हैं ऑब्जर्व, एंड दे ट्राइंग टू फिगर आउट द नेचर ऑफ ब्लैक होल्स. एंड एंड they've just ब्लैक होल होता है या कई किस्म के होते हैं? मतलब आज तक तो सुना था जो चीज अंदर चली गई लाइट भी नहीं वहां से निकल सकती. हाँ तो वो आर ये दे डिफरेंट? no, there's not. The black holes are maybe different in size, because it's been now thought that the center of each galaxy has a black hole, and that is why you see spiral galaxies, and usually in galaxies you see stars moving around a central point, you know. So the question is, why does that happen? And the hypothesis is कि हर कहकशां के बीच में एक ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. um और वो ब्लैक होल्स जो है वो as far as astrophysics knows, cosmology की जो वो है क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, वो यही है कि it results from the death of stars, and the stars can be super massive as well, you know, like hundreds of 100,000 times the size of our sun. And so the black hole that will result in that will be obviously a big black hole. It happens in smaller stars too, and you see smaller black holes. Basically, black hole is the collapse of matter at some point to a situation where it is becomes infinitely dense, and that's why it creates that vortex, as we make as we can, you know, sort of associate it to in terms of trying to visualize what a black hole is. ये तो वो हो सकता है ना कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो हर ब्लैक होल का. नहीं characteristics जो I mean, maybe. I mean, there's no real evidence to state that, apart from the size of the black hole. Obviously, if the size is bigger, then the gravitational fields are stronger. Or क्या कहते हैं, as far as they can tell, no information can escape it, as you were saying, light and radio waves. Or I mean, it even sucks in stars if they get too close to the middle. And it is believed that if a black hole starts to you know, engulf stars, then it gets bigger, because you know you have more and more material going into that. तो ये एक बहुत ही वो है quick description of a black hole. तो माय लास्ट जैसे क्वेश्चन आपने इज दिस वन इज emitting a light, मतलब बजाय इसके कि खा जाए सब चीजों को, ये वाला ब्लैक होल जो तुम अभी बता रहे हो न्यूज आई है. हाँ, I mean, this one is obviously it became a black hole because of what the processes that we spoke about. लेकिन क्या कहते हैं, these things are being observed all the time now with this kind of telescope. तो उन्होंने अब ये देखी एक अजीब unusual and unpredictable एक attribute. तो it's something that they hadn't seen before. तो अब ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो अब obviously इस पे और रिसर्च होगी. हमारे पास वो टेलीस्कोप्स नहीं था पहले जो इस टाइप की चीजों को ऑब्जर्व भी करे, तो हो सकता है कि ये एक बहुत ही कॉमन चीज हो. So but it will be something that they'll be on the lookout for now. और अगर ये कॉमन चीज है जो हमें पहले नहीं पता थी, हम ये समझते थे कि हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के रिस्ट्रेंट्स भी हैं जो जो maybe have kept us from you know, understanding this better. But what we understand, and this may be a one-off that they saw, as it stands, the technology and the physics of black holes still stands. क्या कहते हैं, to say that stars collapse on themselves to an infinite dense point,
विच उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे ब्लैक होल बनता है, मीनिंग वहां पे नोन फिजिक्स फेल हो जाती है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस विद इन द ब्लैक होल, वी नो व्हाट हैपेंस। उसका जो ब्लैक होल का जो स्ट्रक्चर, उसका जो कॉर्नर होता है वो उसको इवेंट होराइजन कहते हैं। दैट इज द लास्ट बाउंड्री ऑफ अ ब्लैक होल वेयर टू विच वी कैन ऑब्जर्व। ऊपर उसके बाद एक साहब थे चंद्रशेखर, ही वाज अ इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि क्या what size of star, what are the limits on a star in terms of its mass and its radius, a white dwarf star that will cause it to collapse into a neutron star or a black hole। और उसके अलावा एक और साहब थे, शॉर्ट्स चाइल्ड नाम है उनका, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि रेडियस अगर हमें पता चल जाए किसी ब्लैक होल का, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सन्स का वो किस साइज का जो सन था, जो स्टार था जिसने वो पर्टिकुलर ब्लैक होल बनाया है। we measure everything in solar sizes, solar masses meaning our sun is the standard for everything, so we measure everything against, so किस स्टार को हम देखते हैं तो वो um, it if it's, you know, it's measured, agar it's 5 times the size of our sun, it's 5 solar masses. If it's 5,000 times the size of our sun, it's 5,000 solar masses. So that is the unit used. And it has also found that in most cases बहुत ही कम distance का black holes होते हैं, like they're in like tens of hundreds of kilometers. They're not even like huge in most cases. And that just shows कि कितनी कम, अगर आप हमारा स्टार जो है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स उसका रेडियस है, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स उसका रेडियस या डायमीटर है, और वो एकदम एक सब 100 किलोमीटर के एरिया में कोलैप्स कर जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने कम एरिया में वो जाके सारा मैटर जो सन में था वो जाके वहां जाके एक 15 किलोमीटर में जाके वो गया। दैट इज व्हाई द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज सो हाई। आपने जो वो बात बोली थी कि क्या कहते हैं, एक थ्योरी है जिसमें गैलेक्सीज के बीच में बिल्कुल ब्लैक होल, तो मतलब जब आप कह रहे हैं कि स्पाइरल जो करती हैं गैलेक्सीज, वो इस वजह से करती हैं थ्योरेटिकली कि हम्म। बीच में एक ब्लैक होल है। तो हम्म। ऐसा क्यों नहीं कि मतलब हमारे पास कोई एक मतलब डेफिनेटिव प्रूफ होना चाहिए कि हमारी गैलेक्सी के बीच में कहीं है, ताकि हम उसे लोकेट तो कर सकें, क्योंकि इट मेक सेंस के एक पैटर्न में क्या कहते हैं हमारी गैलेक्सी चल रही है, तो हो सकता है कि एक ब्लैक होल उसके अपनी फोर्स के साथ कर रहा हो। लेकिन ऐसे क्यों नहीं कि जैसे मैंने एक स्टडी देखी थी, इसमें था कि हमारी जो गैलेक्सी की आउटस्कर्ट्स में चीजें गायब हो रही हैं, लेकिन हमारे ऐसे क्यों नहीं कि बीच में से कोई चीज गायब हो जाए, जैसे सन गायब हो जाए या फिर कोई प्लैनेट जो हमारे उसमें है सोलर सिस्टम में वो गायब हो जाए। तो मतलब इस तरह हमें प्रूफ भी मिल जाए कि ब्लैक होल है, क्योंकि देयर इज एविडेंस ऑफ समथिंग बीइंग लाइक गॉन, कंप्लीटली वैनिशिंग। लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि है, तो मतलब ये थ्योरी थोड़ी सी मुझे वो लग रही है, लाइक क्या कहते हैं, लाइक नॉट समथिंग दैट्स पॉसिबल। What we do know is, I mean, there are certain things जो हमें काफी अच्छी तरह explanation explained है, और they're actually testable in a lab, and one of those is that क्या कहते हैं, तो यह है कि um, हमारा जो स्टार फर्स्ट करें ले ले, हमारा सोलर सिस्टम जो है, we know that there's a massive object at the center of our solar system, और सारे planets उसके गिर्द घूमते हैं, and the reason behind it is that what we just said के there is a massive object at a point in space, and it creates this gravitational field by depressing the space time in its local area, and so therefore you find all these planets orbiting it, kind of like वो जो planets हैं वो उस डिप्रेशन के ऊपर राइड कर रहे हैं, being pulled into that sun, and उनका जो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी है वो उन्हें बाहर रख रही है, लेकिन दोज क्या कहते हैं orbits are decaying very slowly and tending towards going into and crashing into the sun in a billion years। वो ये calculations मौजूद हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वो होगा इसलिए नहीं कि हमें ये भी पता है through a lot of astronomy
the age and life cycles of various types of stars, because we have a lot of data on that. So we know about that. So we know that these planets will not crash into the sun, because the sun will die out before that happens. Now, so basically what I was trying to say is that we know that if there's a central massive object, then any smaller objects will rotate around that. So based on that evidence, when we see कि जैसे हमारी कहकशा के अंदर बहुत सारे सितारे जो हैं, वो बिलियंस ऑफ सितारे जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, which and we can also, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम सेंटर ऑफ द जो गैलेक्सी है हमारी, उस तक भी हमारी रीच है, and we find that there is dark, there is nothing there uh, except for, and it seems like that there is a black hole there that is able to create a strong enough gravitational field to move all of these planets around it in as if it was a whirlpool. Now, the other interesting thing is that looking at, they also have a map of billions of galaxies in our own local galactic region and other galactic clusters around the further away deep space के अंदर. तो वो भी उनका भी यही नेचर लगता है. और ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारे जो गैलेक्सीज अपने अपने क्लस्टर्स हैं, ये भी एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द घूम रही हैं. सो द ट्रेंड इज दैट मोस्ट ऑब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल प्लैनेट्स, बहुत छोटे छोटे जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं, से लेके स्टार्स, और फिर स्टार्स से लेके गैलेक्सीज, दे ऑल रोटेट अराउंड समथिंग. So not it's you're right, not in every case it's a black hole. You must have heard of dark energy and dark matter, जो आप postulate कर रहे हैं कि भाई क्योंकि नजर नहीं आ रहा कि है क्या चीज. इन सम केसेस इट डजंट नॉट नेसेसरली अ ब्लैक होल, लेकिन कोई ना कोई इस टाइप का मैटर है जो is heavier than the matter that we know, and it causes a stronger gravitational field for making in effect जो मैटर है वो, जो हल्का मैटर उसके गिर्द घूमता है. अब इसमें बहुत सारी, इस बहस में पढ़ना जो है वो एक बड़ा बहुत लंबा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे भी साइंसदान हैं जो कहते हैं नहीं इसके कुछ और रीजंस हैं. लेकिन जो वो मोस्ट प्लॉजिबल है और जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इस वक्त जो hypothesis or theories हैं about this kind of thing is that black holes are more sort of relatively smaller phenomenon, and then you have dark energy which is a bigger phenomenon, and is able to is able to control the motion of galaxies and clusters of galaxies, which may contain 2 to 300 billion stars in them. So you are, I mean, Ali, मैं ये कहूँगा तो एक लिहाज से सही भी कह रहे हो, क्योंकि a lot of these things need to be proved experimentally. We have a lot of observations. There's a lot of simulations on computer models, but obviously we can't create a galaxy on the planet Earth. We have to use the tools that we have, and those tools are, the type of astronomy that we do, radio based, opticals, or फिर ये जो out of planet orbiting satellites who are looking at these things. Black holes, from an observable point of view, we can detect them. Let's just put it this डिटेक्ट way. भी बेसिकली इस तरह करते हैं ना, हमें उसकी आउटर लेयर नजर आती है, लाइक वी कांट एक्चुअली सी अ ब्लैक होल, हमें से उसका आउटर जो पोर्शन होता है वो नजर आता है. हाँ, उसका इवेंट होराइजन जो है, आई मीन वी कैन सी इवेंट होराइजन टू सम एक्सटेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे बेसिक उसका जो डिटेक्शन का जो वो है स्टेप, वो ये है कि we see matter rotating around a point which at which point there is nothing there. So the question arises कि भाई ये इतना मैटर जो है ये क्यों स्पाइरल अराउंड कर रहा है किसी भी एक अननोन जगह पे जहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा. सो वो जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही ना, कि जैसे अगर आपने अपने हाथ में एक आपके पास वो ना स्ट्रिंग, उस पर आप पत्थर बांध लें और उसको घुमाते रहे आप, तो अगर आपका हाथ अनविजिबल हो जाए तो फिर ऐसा लगेगा कि वो पत्थर बिला वजह जो है वो हवा में एक पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है. दिस इज द एनालॉजी. You can see the stone
revolving around a point, but you can't see what force is there that is pulling it inwards, right? तो अब जब आप घुमाते हैं, जितना आप तेजी से घुमाते रहते हैं, keeps to try to escape, but it's pulled in by this that force that is being imparted on it by the string. So similarly, that's how black holes work. They have a force that is pulling an object into it, and that object is trying to fall. So they have observed stars being swallowed by black holes. So there's evidence there. And 1 minute you see, it may take thousands, hundreds of thousand years for that orbit, star orbiting a black hole. They have